Hello everyone. Today I'll be talking about Pomodoro technique, which breaks work into 25 minutes chunks, which is very useful for ADHD children, those who have attention deficit hyperactive disorder, those kids, those who are hyper, those who have less attention span, those who can't concentrate on their therapies and studies, they can't sit at one place, they keep on moving from one place to the other. So this technique definitely works with them. These are the steps to follow this technique. First, you need to decide on the task, whether it comes to studies or therapy. अगर आप उनके साथ थेरेपी कर रहे हैं या फिर स्टडीज़ कर रहे हैं, फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड what you are doing. Second step, set a timer for 25 minutes. 25 minutes का आपको एक अलार्म बना के रखना है. Like continuously you have to work with your child for 25 minutes. Means अगर आप थेरेपी दे रहे हैं जो आप सीख कर आते हैं रोज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट से, तो कंटिन्यूसली आप 25 मिनट्स वो थेरेपी देंगे, या फिर 25 मिनट्स आपको पढ़ाना है तो कंटिन्यूसली आप 25 मिनट्स पढ़ाएंगे. क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. देन कम्स द थर्ड स्टेप, वर्क टिल द टाइम बीप्स. तब तक आपको उनके साथ थेरेपी करनी है जब तक वो टाइम बीप नहीं होता है, जब तक बीप नहीं होता है. Then comes the fourth, take a break for 5 minutes. After this task of 25 minutes, take a break for 5 minutes. आपके बच्चे को जैसा सूटेबल है, अगर 5 minutes तो 5 minutes या तो फिर 10 minutes ब्रेक दे सकते हैं. So 25 minutes working, 10 minutes break, and then again resume back with that activity. And after resuming back, so 25 minutes you're working behind your child, 5 minutes you're giving a break, then you resume back again, and then after completing 4 cycles, so इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक. तो आपको जो लंबा काम करवाना है, जो लॉन्ग टास्क है, that you can break into small chunks like this and work for 2 hours with them, whether it comes to therapy, for music and studies. तो आपको ये 20 मिनट्स का अगर टास्क करवाना है तो बीच में आप ऐसे ब्रेक्स देते रहिए. Do not make them study for too long as it will tire them and as they have difficulty in concentrating. So keep the learning fun and interesting so that they can focus. I hope these strategies will help your children too. So guys, if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.